Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum. Fat की chemical properties. First is that of course the fat does not react with water, and in presence of the enzyme it will change into fatty acid and glycerol. As well as when the fat is treated with the steam, it also changes into the same product, that fatty acid and glycerol. ठीक है. The next is that saponification. Saponification means to form soap. And there is the saponification value. That's important. That's the number of milligrams of QH required to convert 1 gram of fat or oil into soap. Saponification value. Number of milligram of QH required to convert 1 gram of fat or oil into soap. इसको कहते हैं saponification value. इसमें ये है कि अगर फैट या ऑयल जो है इट इज़ ऑफ कोर्स कंटेनिंग शॉर्ट चेन फैटी एसिड, तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल होती है, देयर बाई इट इज़ नॉट इकनॉमिकल, दैट सोप इज़ नॉट इकनॉमिकल. But the fat or oil containing higher fatty acid, of course, require less amount of the QH, thereby it is economical. इसके बाद था iodine value. Iodine value, fat reacts with iodine to form, of course, diiodo substances. Fat containing the unsaturated fatty acid, जिसमें डबल बॉन्ड होता है, double bond, that's the fat containing the oleic acid or the fat containing the linoleic acid, which contain 2 double bond, and fat containing the linolenic acid, which containing 3 double bond. So whenever it is allowed to react with iodine, तो डाईआयोडो ये unsaturation ख़त्म हो जाती है, it changes into this one. Acid. Double bond is of course, it is over, and fat is of course that is added up to the diiodo substances. So ये generally this iodine actually it reflect the unsaturation of the fat. It tells the degree of unsaturation. Iodine value से कहते हैं iodine value tells the degree of unsaturation of the fat. Degree of unsaturation, what does this mean? That means iodine value, which tells us what the degree of unsaturation, number of grams of iodine. Number of grams of iodine added up or absorbed in 100 gram of the fat or oil. Number of grams of iodine added up or absorbed by 100 gram of oil or fat. So that tells what the degree of unsaturation of fat. Degree of unsaturation of fat. So ये generally this is the people who are deals in this cooking oil preparation, जो cooking oil बनाते हैं, तो उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है. वो ये देखते हैं कि हम जो ऑयल ले रहे हैं उसमें कितनी अनसैचुरेशन है. जितनी ज़्यादा अनसैचुरेशन हो दैट्स बेटर, लेकिन बहुत ज़्यादा भी ना हो बहुत ज़्यादा भी ना हो. मसलन इन केस ऑफ योर बटर फैट की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन दैट आयोडीन वैल्यू इज समवेयर दैट इज
30 के करीब है। एनिमल फैट, चर्बी वगैरह, उसकी वैल्यू 40 है। whereas दी ओलिव ऑयल, उसकी वैल्यू है ऑलमोस्ट 80। एंड इन केस ऑफ कॉटन सीड ऑयल, उसकी वैल्यू है ऑलमोस्ट 110। ये बेहतर ऑयल तस्वर किया जाता है, ये वाला यहाँ जो वैल्यू है वो बेहतर होती है। बटर फैट भी ठीक है, लेकिन ऑयल के लिहाज से ये दोनों ऑयल दैट्स बेटर। बहुत ज़्यादा वैल्यू ना हो, मसलन इन केस ऑफ लिनसीड ऑयल, इसकी वैल्यू मोर देन 200। लिनसीड ऑयल की वैल्यू दैट इज़ आयोडीन वैल्यू 200, इट इज़ नॉट फिट फॉर एडिबल। अलसी का तेल, अलसी का तेल खाने के काबिल नहीं होता, इट इज़ हाईली अनसैचुरेटेड। गर्म वाली बात नहीं होती। जो ही आप इफ़ यू जस्ट हैव ए कोट ऑफ दैट linseed oil on a wooden table, at once it changes into resinous compound। एकदम वो प्लास्टिक में बदल जाता है, एकदम वो प्लास्टिक में बदल जाता है, इतनी जल्दी उनकी ऑक्सीडेशन होती है। तो इस किस्म का ऑयल जो है इट इज़ नॉट फिट फॉर एडिबल। उसे इस्तेमाल करते हैं किसमें, पेंटिंग में, पेंट्स में इस्तेमाल करते हैं अलसी के ऑयल को। अलसी खाना ऐसा इट्स वेरी गुड। अलसी की पिनियाँ खाई जाती, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। अलसी कच्ची खा लो, बहुत अच्छा है। ऑयल ना खाओ, ऑयल नहीं खाना। ऑयल वैसे खाने वास्ते मिलता भी नहीं, पेंट्स में इस्तेमाल होता है। तो हाईली बहुत ज़्यादा हो अनसैचुरेशन तो वो अच्छा नहीं होता, इट्स नॉट गुड। हाँ जी, हेलो, इधर से किसी ने हाथ खड़ा किया था। हाँ, बड़ी अच्छी बात, पिनिया खाया करो, अच्छी बात। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द rancidity। rancidity, very important topic, that is rancidity। इसे अच्छी तरह समझें आप। rancidity mean when oil or fat it is exposed to high temperature, to air, to sunlight and moisture। जब ऑयल या फैट को इन चीज़ों के में एक्सपोज किया जाए फॉर लॉन्ग टाइम, the fat become rancid। The fat become rancid। Rancid mean the fat starts giving unpleasant odor and unpleasant taste। Rancidity mean it starts giving unpleasant odor and unpleasant taste due to formation of course the fatty acid and aldehydes and ketone and this and that। So factors which are of course responsible to cause the fat rancidity या rancid, दो किस्म की। One is that is oxidative rancidity। Oxidative, the other is hydrolytic। Oxidative rancidity and hydrolytic, and the factors which are of course responsible to cause rancidity, they are what I've told you, that is temperature, sunlight, air, air mean oxygen, and moisture, that means water। These are the factors which are responsible to cause the fat rancid। ऑक्सीडेटिव rancidity में ये फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ये और ये। एयर मीन ऑक्सीजन, टेम्परेचर, सनलाइट मीन कंटेनिंग यूवी लाइट, एंड एयर। So they of course cause what? They oxidize the fat into aldehyde and acetones, ketones। हाँ, एसीटोन कह लें, एसीटोन और aldehyde नहीं, कीटोन ही कह दो, कीटोन एंड aldehydes इसमें बदल देते हैं, जिसकी वजह से वो फैट जो है वो इट इज़ नॉट फिट फॉर एडिबल पर्पज़। उसकी वजह से द फैट जो है इट स्टार्ट्स गिविंग अनप्लेजेंट ओडर एंड
taste as well. In case of hydrolytic rancidity, these factors are responsible. Moisture, this one, air, well, of course, the temperature, they are involved. In case of hydrolytic rancidity, moisture, air and temperature are involved. First, of course, the fat, it becomes hydrolyzed, changing to fatty acids and glycerol. In the first stage, hydrolysis hoti hai fat. Then those fatty acids, they are, of course, वो इसमें convert होते हैं aldehyde ketones में. In the next stage, the fatty acids are converted into aldehydes and ketones. तो इस तरह the fat, of course, become rancid through two methods, oxidative and hydrolytic rancidity. याद रखें हमेशा, the rancid fat is not fit for edible due to the destruction of the vitamins, fat soluble vitamins A, D, E, A, K, A, D, E, A, K, and it also causes the destruction of unsaturated fatty acid. It also causes destruction of unsaturated fatty acid. Vitamins भी तबाह हो जाते हैं और उसमें फैट में या ऑयल में जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनकी भी तबाही फिर देती है. Anyhow, in order to check the rancidity, the people use antioxidant. In order to check the rancidity, antioxidant, they are utilized to stop the rancidity. To stop the rancidity, antioxidants are used. कौन से? Butylated hydroxytoluene, butylated hydroxyanisole. They are the antioxidants which are being utilized to stop the rancidity. To stop the rancidity for a long period. इसके बाद अगर ज़्यादा टाइम गुजर जाए तो फिर ये भी काम नहीं आता. इसके बावजूद rancid हो जाती है फैट. So that is important. That is the rancidity. Thereafter, we have to study another thing, that is the steroid and sterols. Steroid and sterols. Steroid and sterols. These substances, they are non-sponifiable fraction of lipid. लिपिड को जनरली जब ट्रीट किया जाए विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड तो सोप बनता है. ऑयल या फैट को जब व्हेन एवर वी ट्रीट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड तो सोप बनता है. लेकिन ये फैट और ऑयल में ऐसी फ्रैक्शन है जिसका सोप नहीं बनता, जिसका सोप नहीं बनता. इसलिए इट्स नोन एज नॉन स्पॉनिफाइबल फ्रैक्शन ऑफ लिपिड. नॉन sponifiable fraction of lipid. Non-sponified fraction of lipids are known as steroid and sterols. These substances, they contain a definite chemical structure in them. इनमें ख़ास chemical structure होता है, वो इस किस्म का होता है. स्टीरॉयड में इस किस्म का स्ट्रक्चर होता है, केमिकल स्ट्रक्चर. CH3 here, CH3 here. ऐसा. This cyclopentane, pentane, इधर 5 कोने ने. Cyclopentane. This is phenanthrene having hydrogen. तो साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन. साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन.
वो आपकी किताब में ज़रा नाम उनका गलत लिखा हुआ है, आपकी किताब में नाम उनका गलत लिख दिया। साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोपर थी, उसमें लिखा हुआ है पर हाइड्रोसाइक्लोपेंटेनो पर। इट इज साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन। तो इस किस्म का स्ट्रक्चर होता है स्टीरॉयड और स्टीरोल में। एंड ऑफ कोर्स द substances which are present in the animal, they are what? Cholesterol. Cholesterol. Keep quiet. Keep quiet. Sex hormone. Seven dehydrocholesterol. Bile acids. Bile acids. Alkaloids. Alkaloids इस किस्म के सब्सटेंस हैं जो कि which are present in the animal body, particularly cholesterol. That's the most important. Cholesterol जो है, cholesterol is what? हमेशा याद रखें, it is a necessary evil. It is a necessary evil. Cholesterol is a necessary evil. Necessary mean बहुत ज़रूरी है, which is very essential. Evil mean it causes blood pressure if it increases beyond 220 milligram per 100 ml. Normal value जो है, normal value in our blood, that is 150 to 220 milligram per 100 ml of blood. ये नॉर्मल वैल्यू है, उसकी रेंज है। अगर ये कोलेस्ट्रॉल इससे ज़्यादा बढ़ जाए तो इट कैन स्टिक एनीवेयर इन द ब्लड वेसल्स and cause blood pressure. That's why it is evil. If the cholesterol level increases